Hi, Amit sir. Good morning. So I'm just making you Hello, good morning. morning, sir. So I'm just making you the host, and then you can start the session, sir. Yeah, sure. I just need a minute. Yeah, yeah, sure. All right, guys. Let me share my screen. Okay. Uh, just for now, let me also start a virtual machine because then I will demonstrate overall things about Linux and everything. Okay. So let it run in the background. हेलो अमित सर, गुड आफ्टरनून। Hello, good afternoon. सर, ये वेबिनार हिंदी में रहेगा या इंग्लिश में सर? वैसे तो इंग्लिश में रहेगा बट आपको कुछ अगर क्लैरिफिकेशन चाहिए हिंदी में भी हो जाएगा। और सर, इट मुझे विल बी आपका बैच मिक्स। ज्वाइन करना है। हाँ जी, हाँ और जी। तो सर, हिंदी में अवेलेबल है कोई बैच? देखो वैसे बेस्ड ऑन द व्हाट डू कॉल इट एडमिशंस डिसाइड होता है कि हम हिंदी में कर पाएंगे कि इंग्लिश में, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट टॉक टू द टीम और आप भी कर सकते हैं बात, राइट, कि इस बैच में क्या स्ट्रेंथ है एंड हिंदी सूटेबल रहेगा कि नहीं, तो हम हिंदी में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, एक्चुअली मैं 6-8 महीने से वेट कर रहा हूँ सर। ओह, 6-8 हम्म। महीने से। ओके। यस सर, मेरा हमने राइट। दरअसल इस बारी आपकी उम्मीद पूरी करेंगे। इस वीक डेज पे अभी हिंदी बैच प्लान करेंगे, ठीक है। ओके ओके, पक्का। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो आई एम लॉग्ड इन। चलो ठीक है। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। Okay guys, so first of all I would like to welcome you all to this webinar. My name is Amit and I'll be the trainer for this course. And this course is Fundamentals of Linux Operating System and, or we can say, slash RHCSA preparation course. Okay, so what is RHCSA? The certifications from Red Hat, etc. I'll explain them. But ultimately, it is the fundamentals of Linux. Okay. Okay, so fundamentals of Linux. In this, topic, the Linux is the main, the objective. So what exactly is Linux?
Linux operating system, you might have heard. It's the most popular operating system out there when it comes to running business applications on the servers with business requirements. What are the business requirements? For example, आपने एक e-commerce website launch किया, right? And you are basically selling maybe some garments, shoes, or maybe, I don't know, it can be anything. Okay, so it's a e-commerce website. And you're expecting, let's say, 1 lakh visits per second. So not only India, but globally, अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो 1 लाख विजिट्स पर सेकंड हो रहे हैं आपके वेबसाइट पे. Now 1 lakh visits per second, it means the operating system on the server should be capable of handling this request, these many requests. तो ये कैसे होगा? ये तभी हो सकता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम को उस चीज के लिए डिजाइन किया गया हो, राइट? तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अलग अलग तरीके के आते हैं, ठीक है? एक लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आता है फॉर डेस्कटॉप, ओके, फॉर डेस्कटॉप यूजर्स, एंड यूजर्स. फिर लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आता है फॉर सर्वर. On a server, you can install Linux operating system and use it. Okay, so on a server, you'll be running a web server application for your e-commerce website. Now, the problem is, इस server पे operating system कौन सा होगा? You can use Windows, you can use Linux, but अच्छा कौन सा है? The best option here is the Linux OS. Okay, and if you talk about how many Linux operating systems are available, which are suitable for business workload, तो उसमें टॉप में आता है RHEL का नाम. इट स्टैंड्स फॉर रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स. ओके, सो रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम holds the highest share in the enterprise world, or we can say in the world, when it comes to Linux operating system. Okay, so हम भी RHCL को ही ध्यान में रखकर आगे पढ़ने वाले हैं. ओके, so this course is basically designed around RHCL, Red Hat Enterprise Linux version 10. Okay, version 9 is mainstream. Mainstream means कंपनीज में भी क्या यूज हो रहा है? लेटेस्ट यूज हो रहा है? नहीं, लेटेस्ट तो अभी आया है. तो यूज क्या हो रहा है? एक वर्जन पीछे 9 यूज हो रहा है. ओके, इंडस्ट्री अभी वर्जन 10 में आ गई, कुछ सर्वर्स या कुछ कंपनीज आ गई होंगी, बट मेजॉरिटी अभी 9 पे या 8 पे ही है. हम क्या करने वाले हैं? हम लेटेस्ट पढ़ेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इसके पुराने वर्जन में क्या डिफरेंसेस हैं, राइट? ताकि आपको अगर कभी जॉब मिले इस कोर्स के बाद, तो आप रेडी रहेंगे इंडस्ट्री के नीड्स के साथ. बिकॉज व्हेन यू आर हायर्ड एज अ लाइनेक्स एडमिन, they will expect you to work on RHL 8, RHL 9 और even RHL 10 in the future. ठीक है? तो हमारा माइंडसेट, इस कोर्स का माइंडसेट भी यही है, ऑब्जेक्टिव यही है कि आप सब टाइप के सारे वर्जन्स पे काम कर पाए. ओके, ऑलराइट, सो this is just an idea like what is going to happen. And if I talk about the Linux server in general, so Linux server, why is it popular? Because it is good option for running applications, that is okay. But how it became popular when there was already Windows and all, then why Linux came into the picture? See, the simple thing is because of one feature which is called open source. Open source means जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड है वो अवेलेबल है फॉर डाउनलोड. ओके, सो द क्रिएटर ऑफ लाइनेक्स कर्नल, अब ये याद रखना है वर्ड कर्नल, the Linux kernel or the kernel in general is that component of the operating system which is responsible for connecting to the hardware. आपके फोन में Android, iOS, Apple फोन और Android फोन, जो भी फोन है आपके पास, उसके अगर आप सेटिंग्स में जाओगे, वहां पे अबाउट फोन में जाएंगे, जहां पे दिखता है एंड्रॉइड वर्जन सो एंड सो, iOS वर्जन सो एंड सो, वहीं पे दिखेगा कर्नल, कर्नल वर्जन. ओके, तो आपके फोन्स में भी कर्नल है. ओके, विंडोज में भी कर्नल होता है, लाइनेक्स में भी कर्नल होता है. तो कर्नल वो कंपोनेंट है, वो सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो मेन पार्ट जो हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है. ऑलराइट, जब आप अपने फोन में वाईफाई को ऑन ऑफ करेंगे, तो आप तो टच कर रहे हैं बटन को या टैप कर रहे हैं, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है?
आपने तो यूआई या यूजर इंटरफेस से इंटरेक्ट किया, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है? बैकग्राउंड में कुछ सिग्नल या कुछ कमांड्स कर्नल के पास पहुंचती हैं, फिर कर्नल एज पर द पर्पस ऑफ द कमांड वो एक्शन लेगा हार्डवेयर से बात करके। ठीक है, तो लाइनक्स कर्नल और कर्नल इन जनरल, दैट इज द कोर कंपोनेंट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो द डेवलपर ऑफ लाइनक्स कर्नल इज लाइनस टॉरवल्ड्स। तो लाइनस टॉरवल्ड्स, अगेन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, at when he was studying computer science engineering, at that time Unix operating system was really popular. And I'm talking about, you know, let's say 1960s or 70s maybe. So 1960s 70s Unix operating system was released, and it became really popular because of features like multitasking. Okay, so multitasking, multi-user, okay, a security system, let's say it was secure, okay, and many other things. तो 1970 में मल्टीटास्किंग की बात हो रही है, मल्टी यूजर की बात हो रही है, जब मॉनिटर्स तक नहीं होते थे, प्रॉपर कीबोर्ड नहीं होते थे, यूजर कंप्यूटर को इनपुट देने का मेथड डिफरेंट होता था, आउटपुट का डिफरेंट मेथड होता था। ओके, वहां पे ऐसा सिस्टम नहीं था कि आपके सामने कीबोर्ड माउस है और मॉनिटर है और लगे रहो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनना बेस्ड ऑन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि ये सब काम कर पाए, वॉज अ बिग डील। Unix operating system was closed source, or we say proprietary operating system. Okay, so it was a proprietary operating system. इसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है। अब ये इतना अच्छा है कि सारे डेवलपर्स, जो उस टाइम डेवलपर्स थे, प्रोग्रामर्स थे, उनको बड़ा इंटरेस्ट आया कि ये बना कैसे, हमें भी सीखना है, हमें भी इसको रेप्लिकेट करना है, हम भी ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं। एंड बिकॉज इट वॉज प्रोप्राइटरी, ओपन सोर्स था ही नहीं, इसका सोर्स कोड मिल ही नहीं सकता था, तो मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स हु वर रियली इंटरेस्टेड, दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ सिमिलर मॉडल। वो भी ऐसे ही कुछ बनाने लगे। ठीक है, तो उन्हीं डेवलपर्स में से एक लाइनस टॉरवल्ड्स, LINUS टॉरवल्ड्स। ओके, सो लाइनस टॉरवल्ड्स ने भी इसको एज अ हॉबी प्रोजेक्ट लिया कि मैं भी एक लाइनक्स ऑपरेटिंग, एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लोन बनाऊंगा। लाइनक्स नाम तो बाद में आया। ठीक है, तो क्लोन बनाना है, तो उन्होंने स्टार्ट किया कर्नल डेवलपमेंट से। ओके, सो कर्नल डेवलपमेंट से स्टार्ट किया एंड ही वाज एबल टू फिनिश इट। तो एक बेसिक स्टार्टिंग कर्नल विद बेसिक फंक्शनैलिटीज वो रेडी किया और उसको ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म में होस्ट कर दिया। अब उससे हुआ क्या, ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म में होस्ट करने से इसका सोर्स कोड अवेलेबल हो गया बाकी डेवलपर्स को। राइट, जब बाकी डेवलपर्स को सोर्स कोड अवेलेबल हो गया तो उन्होंने सोर्स कोड को डाउनलोड किया। ओके, डाउनलोड किया और उसमें चेंजेस किए और अपने अलग अलग नाम से उसको डिस्ट्रीब्यूट करने लग गए। ठीक है, अब इसको लाइनक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में LIN comes from Linus, the name of the developer, and UX is for the Unix, UNX, Unix. So Linus, Unix, Linux. Okay, कोइंसिडेंटली ये मैच भी कर रहा है नाम से, राइट राइट। सो इसका एवोल्यूशन ऐसा हुआ है। अब बिकॉज ये ओपन सोर्स है, इसका सोर्स कोड अवेलेबल है, मल्टीपल डेवलपर्स अराउंड द ग्लोब कैन एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू दिस प्रोजेक्ट। और ओपन सोर्स का ये रूल है कि अगर आप कुछ ओपन सोर्स रखते हैं, उसका सोर्स कोड अवेलेबल है, जो भी सोर्स कोड को यूज करेगा, एक नया प्रोडक्ट बनाएगा, वो प्रोडक्ट भी ओपन सोर्स ही रहेगा, एंड टू एंड ही ओपन सोर्स रहेगा। ठीक है, तो अब इसी फीचर के चलते एक ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें से एक रेड हैट ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड जब हुई तो इनका फंडामेंटल था कि वी विल यूज और वी विल पिक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ओपन सोर्स सॉल्यूशंस, and then we will convert those solutions into enterprise level softwares or on enterprise level solutions. Okay, so they started with Linux kernel. Okay, so Linux kernel, why? Because industry was in the need of an operating system for servers suitable for handling heavy workload. तो ये उस टाइम की जरूरत थी। रेड हैट ने आइडेंटिफाई किया, राइट, एंड रेड हैट ने लाइनक्स कर्नल को किया डाउनलोड। एक टीम बनाई जो C++ इसमें प्रोफिशिएंट थे,
Okay, and they started with the development of their own custom operating system. Okay, so not only Red Hat, many other organizations or groups like Ubuntu. Canonical is the group. Product is called Ubuntu. Okay, let's say Canonical. Okay, so Canonical also did the same. They created a team. They download the Linux kernel. Okay, and they start working on it. Now their objective was to create a desktop operating system. Okay, and Red Hat's objective was to create a enterprise level or server level operating system. ठीक है, तो दो अलग अलग एरियाज में डेवलपमेंट हो रहा है, और Red Hat and Canonical are different, teams or different companies, you can say. So finally, Red Hat came up with the product which is called RHCL. Okay, so RHCL was released, became really popular because of the enterprise grade security. Okay, security and business requirement were fulfilled with those features. Okay, and goodness of open source and all. ओपन सोर्स होने का एक और फायदा है, अगर कोई नया टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड आया है, फॉर एग्जांपल वाईफाई 7, तो वाईफाई 7 का अडेप्टेशन आपको जल्दी लाइनेक्स में दिखेगा कंपेयर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स. ऑब्वियसली बिकॉज लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो लाइनेक्स कर्नल है वो तो अभी भी ओपन सोर्स है, राइट? उस पर तो अभी भी डेवलपमेंट हो रहा है, उसका लेटेस्ट वर्जन अभी भी यूज किया जा रहा है बाकी कंपनी से. तो मास्टर तो यही है, मास्टर ब्रांच बोलते हैं, तो मास्टर ब्रांच तो यही है. ओके, तो इसी को यूज करके ही कंपनीज अपना आगे अपडेट्स लेके आती हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स में. In fact, you can also check it out. Just go to any browser, open any browser, go to Google and just type Linux kernel download. Okay, you see this GitHub link, Tor Worlds Linux. Click on it. Right, तो ये है Linux Tor Worlds और ये इनका GitHub का प्रोफाइल नहीं खुल रही. Never mind. Let me click on his name. Yeah, here it is. By Tor Worlds. What? Somehow his profile नहीं खुल रही है. Otherwise, हाँ खुल गई. Okay, so he is Linus Torvalds. Okay, he is the founder, developer of Linux kernel. Okay, let me go back. Okay, so all the files do you see here? All these are source code files. Code files कह लो, एक सारी code files हैं, right? चलो एक example दिखाते हैं. इधर एक kernel folder होना चाहिए. ये रहा. कर्नल की कुछ एक फाइल्स देखते हैं. चलो ये एक प्रोग्राम फाइल है, सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है. अगर आपको सी आती है गुड, नहीं आती है टेंशन मत लेना. ओके, आपको इसमें सी लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि सोर्स कोड दिखता कैसा है. ये सोर्स कोड है, इसका मतलब ये नहीं कि यही सेम कोड आपके मशीन में चलेगा, नहीं. इस सोर्स कोड से इसको कन्वर्ट करके एक मशीन कोड बनाया जाता है या एक इंस्टॉलर फाइल बनाई जाती है. ओके, तो प्रोग्राम्स जब लिखे जाते हैं तो सोर्स कोड ऐसा होता है. जब इसको कन्वर्ट किया जाता है एग्जीक्यूटेबल में तो वो एक exe फाइल और सम अदर फॉर्मेट फाइल बनती है जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंड करे. इन द केस ऑफ विंडोज इट विल बी exe फाइल. In the case of Linux, it will be something else like RPM file or something else, right? अब ये पूरा डाउनलोड करना है. If you want to download it, just click on this green button and you will see download zip. You can also download, but what will you do with this download? I mean, do you know how to create an operating system? No? Then there is of no use. So if you're a programmer, you know how to develop an operating system, then you can. And obviously operating system कोई एक इंसान नहीं बना सकता. It needs a team. Okay, now see this. How many people are actively contributing to this open source project? Contributing means adding new features, fixing bugs. ठीक है, तो देखो यहाँ कितना लिखा है, 16, more than 16,985 contributors. इतने सारे लोग एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और 13 आवर्स पहले भी किसी ने कुछ अपडेट किया है फाइल में. लाइनस टॉरवल्ड्स ने मर्ज किया है, किसी ने अपडेट किया होगा. मर्ज मींस जो भी चेंजेस इन ब्रांचेस में होते हैं. ब्रांचेस दिख रही हैं, एक सेकेंड. नो, मुझे नहीं दिख रही. ओके, बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस आई एम नॉट एबल टू सी द ब्रांचेस. ब्रांचेस में मेन फीचर्स पे डेवलपमेंट किया जाता है एंड जब फीचर्स बन जाते हैं तो मास्टर में उसको ऐड किया जाता है. ठीक है, तो ये किस टॉरवल्ड्स ने मर्ज किया है इस ब्रांच को मास्टर में. ओके, 13 आवर्स पहले. तो ये एक्टिवली यहाँ पे काम हो रहा है. जब ये स्टेबल रिलीज आता है
लाइनेक्स का, तो उस स्टेबल रिलीज को कौन यूज करता है? RHEL एंड ऑल अदर कंपनीज लाइक उबंटू, नोबल सूजे, लाइक दैट। ठीक है, तो ये सारा इकोसिस्टम ऐसे चल रहा है। एंड बिकॉज इट इज ओपन सोर्स, यहाँ पे ज्यादा लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ अगर बग आएगा तो फटाफट फिक्स भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या मिलेगा इन दी एंड? मोर स्टेबल, रोबस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। और इन्हीं चीजों की वजह से ही ये पॉपुलर है। Linux operating system is used on the servers where the business need is critical. The business cannot afford any downtime. Downtime मतलब एप्लीकेशन एक सेकंड के लिए भी अनअवेलेबल या ऑफलाइन नहीं होना चाहिए, अगर ये रिक्वायरमेंट है। या फिर एप्लीकेशन को मिलियंस ऑफ यूजर्स यूज करने वाले हैं, अगेन ये भी एक बिजनेस नीड है। तो इन केसेस में मोस्ट सुटेबल इज लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, पीरियड। So that is why Linux is important, right? Guys, any questions till now? Okay. Just a second, guys. Yes, Darshan, I can सर see your hand. गिटहब हाँ जी। एक्चुअली क्या है, मतलब किस तरह की वेबसाइट है, इसमें क्या अच्छा, क्या GitHub अवेलेबल है? एक्चुअली क्या होता है कि लेट्स से आप चार दोस्त चाह रहे हो एक वेबसाइट बनाना। ठीक है, आप रहते हो लेट्स से दिल्ली में, आपके बाकी दोस्त रहते हैं कोई मुंबई में, कोई बैंगलोर में। अब पॉइंट ये है कि आप सब एक साथ काम कैसे करेंगे? आप तो अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो आप अपना सारा कोड एक जगह पे कैसे रखोगे? तो आप क्या करेंगे, आप गिटहब पे अपना कोड रखेंगे। गिटहब के कोड में लेट्स से आपकी वेबसाइट में चार फाइल्स पे काम होना है। ठीक है, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 एंड 4। ठीक है, तो लेट्स से आप फाइल 1 में काम कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स से डेवलपर 1 इज वर्किंग ऑन फाइल 1, डेवलपर 2 इज वर्किंग ऑन फाइल 2, डेवलपर 3 इज वर्किंग वर्किंग ऑन फाइल 3 एंड डेवलपर 4 इज वर्किंग ऑन फाइल 4। तो ये कोलैबोरेटिव काम हो सकता है अगर आपका सारा कोड गिटहब पे पड़ा हो, मतलब आपका सारा सोर्स कोड गिटहब पे पड़ा है। ठीक है, तो उसमें और भी चीजें होती हैं, जैसे ब्रांचिंग होता है, मर्जिंग होता है, कमिट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें इन्वॉल्व। ये गिटहब का आइडिया मैं बाद में दूंगा, बट आप इसको ऐसे लेके चलो कि ऑनलाइन रेपोजिटरी टू कीप द सोर्स कोड और टू कीप द प्रोजेक्ट फाइल्स। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि आप गिटहब से ही फाइल्स को डाउनलोड करेंगे, लेटेस्ट फाइल्स को डाउनलोड करेंगे और यहीं पे फिर अपना काम भी सेव कर देंगे। तो जब सेकंड डेवलपर, आप पैरेलली भी काम कर सकते हैं, सारे डेवलपर्स अलग अलग भी काम कर सकते हैं, अल्टीमेटली सारी फाइल्स गिटहब में ही पड़ी मिलेंगी। ओके, वहीं पे रहेंगी सारी फाइल्स। ओके, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, ऑल राइट। सो while we are understanding Red Hat Linux and all, let me also talk about some other distributions. Now in Linux you will hear this term distribution. Now what is a distribution? Distribution is the same thing. जब Linux kernel को यूज किया किसी कंपनी ने या किसी ग्रुप ने और एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया, न्यू ओएस, और उसको एक नया नाम दे दिया, लेट्स से काली लिनक्स और मे बी एल्मा लाइनक्स और रॉकी लाइनक्स। ये बहुत पॉपुलर ओएस डिस्ट्रीब्यूशंस हैं आजकल। ओके, रॉकी लाइनक्स और मिंट लाइनक्स, आपने सुना ही होगा इनमें से किसी का नाम, और सेंट ओएस, फेडोरा, all these are Linux distributions. RHEL is a Linux distribution. SUSE, SUSE, Ubuntu. Okay, so all these are what? The end products from Linux kernel modified into a special purpose product. Kali Linux, its purpose is to perform penetration testing, and for the students who are learning CEH, they normally use Kali Linux because Kali Linux के अंदर ही बहुत सारे टूल्स एम्बेडेड हैं। एम्बेडेड तो नहीं बोलूंगा, बट प्री इंस्टॉल्ड है, राइट? सो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स प्री इंस्टॉल्ड हैं विच विल हेल्प यू लर्न CEH। ओके, देन Elma Linux फॉर डेस्कटॉप यूजर्स, Locky Linux फॉर डेस्कटॉप, Mint Linux फॉर रास्पबेरी पाई, वो आता है ना छोटा सा बोर्ड रास्पबेरी पाई, उस पर आप Mint Linux डाल के उसको यूज कर सकते हैं। CentOS, a free version, a production level operating system with free updates। ओके, अब अभी नहीं है ये फ्री अपडेट्स और प्रोडक्शन लेवल नहीं रहा। आई टेल यू द स्टोरी इन फ्यू मिनट्स। फेडोरा
again an operating system with latest features. Red Hat, the most stable enterprise level operating system. SUSE, it's a competitor of Red Hat. Okay, Ubuntu, again, competition of Red Hat, like that. All right, so these are all distributions. In the companies, what is used? On production servers, where the actual application is running, it's open to public. We can say multiple hits per second, like that. So on those servers, either RHEL will be used or SUSE will be used, or even Ubuntu Pro. It's a new distribution now. Ubuntu Pro might be used, but the most widely used is RHEL. Okay, maybe on development servers जहाँ पर सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, वहाँ पे Ubuntu यूज कर लिया जाए, या CentOS या Fedora, like that. Or maybe use on of testing latest servers. हाँ जी. Someone said something. Okay. So when you talk about enterprise level operating systems, RHEL, SUSE. SUSE is not the right term. Right terminology is SLES. SUSE Linux Enterprise Server. Okay. SUSE or SUSE Linux Enterprise Server or Ubuntu Pro. These are all enterprise level operating systems. Fedora, CentOS mainly meant for test servers where testing is performed on the applications or development is performed. Development work is being performed, right? Meant for special hardware like, as I said, Raspberry Pi. Rocky, again, for users who want a replacement of Windows, just like Ubuntu, replacement of Windows, like that. Okay? So these are the Linux distributions. Now, when you learn Linux, how will you prove it to the companies that you know Linux, you're ready to work on the live servers? So you can prove it by clearing the certifications, right? So Red Hat offers a certification program where the first certification is called RHCSA. Okay, so Red Hat Certified System Administrator, like that. Okay, so Red Hat Certified System Administrator. What are you going to learn with RHCSA and all? You're going to learn how to manage a server at the fundamental level, how to manage users, storage, and all. Shortly, I'll show you the table of contents. Okay, just give me a few minutes. Okay, so it's a like 3-hour exam, 300 marks, maximum marks, and you have to clear the exam by obtaining 210 out of 300. Looks a big number, but it is really easy. Okay, most of the questions, I think there are like 18, 19 questions in the exam. 15 questions are straightforward 2-line answers, 2-line solutions. Maybe 1 or 2 questions will take 10 to 20 minutes of time. Although those are also steps based. Step 1, do this. Step 2, do this. That's why 15, 20 minutes for those questions. Otherwise, it's very easy. Okay, so it's a 3-hour duration exam. Once you have this certification handy, then basically you are proving the metal that yes, you are ready to work on the production servers. Okay. Most of the job postings on job portals like Naukri, Monster, Indeed, you can check it all. You will see on most of the job postings, even for Linux fresher, it will say RHCSA mandatory. Most of the job postings, it will say RHCSA mandatory. See, if you don't take the exam, doesn't matter. You have the knowledge, you can clear the interviews, and you can get the job. But the question is, how will you apply for that job where it says RHCSA mandatory? There are few jobs which says RHCS. There are many jobs which says RHCSA mandatory, and some jobs which doesn't specify any certification. They simply say you have the knowledge, we'll take the interview. Okay, you just have to prepare your CV in a way that you get shortlisted. And to prepare the CV, you need to have certain skills mentioned. Also, you should know that. Number 1, the Linux operating system, obviously, let's say Linux. Then shell scripting. Okay. Then containers. Okay. Firewall knowledge. Okay. Networking knowledge. So Linux, and yes, Ansible automation. What is Ansible? I'll tell you shortly. So these are the key skills. If you, as a fresher, if you know the fundamentals of these topics, you're good enough. Okay.
But again, as I said, if you want to apply at multiple job postings without worrying about, you can apply or not, just simply clear the exam. Okay, if you don't clear the exam, no worries, you can still apply for those jobs which do not have RHCSA certification as mandatory. Okay, both the options are available, right? So now you will learn Linux with this course. You will learn shell scripting. You will learn the basics of containers. You will learn the basics of firewall. You will learn the basics of networking. And in networking, I'm not saying CCNA level, the basic stuff, IP address, what is IP, DNS, gateway, the core concepts, how the network data or network traffic flows, the routing table, okay, all those things, right? And finally, the Ansible. Now, what is Ansible? I'll give you one idea. Let's say you are a system admin. As a system admin, what are you going to do? You're going to manage servers. Let's say you have 100 servers under you, or we can say that you are managing 100 Linux servers. And the client says to add a user by the name demo on all 100 servers. ये आप कैसे करेंगे? Manually? Yes, manually कर सकते हैं, but how about saving some time? Because manually, it's going to take more than maybe 4 to 5 hours. Maybe because you are going to log into server number 1, add the user, set the password, verify, log out. Go to server number 2, add the user, set the password, verify, log out. You perform all these 3-4 steps on all the 100 servers. It's going to take 3-4 hours of time. थोड़ा सा break भी लोगे बीच में, right? What about doing all of this activity within 30 minutes? Yes, you can do that with automation. You don't have to do anything manually. Using an automation tool like Ansible. Again, Ansible is also an open source. Best of the best, automation tool, open source. And now Red Hat is doing what? Red Hat has evolved it. Red Hat took the open source code, added few more features. Okay, and now using Ansible, what you can do is you can automate Linux operating system, automate tasks on Linux operating system, Windows operating system, network devices, storage devices, cloud infrastructure, virtualization or virtual infrastructure. So basically, Ansible can connect to all these devices and can perform the configuration management. तो जब भी आप किसी सर्वर पे कुछ इंस्टॉल कर रहे हैं एप्लीकेशन, कुछ फाइल्स मॉडिफाई कर रहे हैं, तो उसको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बोला जाता है, राइट? तो एंसिबल से आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं. ओके, one more thing, just a second. So how will you do this? How will you add a user using Ansible? Just one single line. Obviously, there is a installation and configuration task. So that is a prerequisite. तो आप यहाँ पे बस लिखेंगे Ansible all -m user module -a कौन सा user है demo, right? That's it. This one single line. So Ansible will connect to all 100 machines and use the module user in the background and add the user demo. पासवर्ड भी सेट करना है तो पासवर्ड भी सेट हो जाएगा. पासवर्ड लेट्स से रेड हैट आपको सेट करना है पासवर्ड, ये भी हो जाएगा. तो बस हो गया, आपका यूजर नेम भी बन गया, पासवर्ड भी सेट हो गया, और आप इसको रन करो, चाय पी के आओ, वापस आओ, और हो गया काम. So this is Ansible automation. Officially, Ansible is not part of RHCSA, but in my course, I have added this as a bonus topic. Okay, you're not going to pay anything for this. It's a bonus free topic to learn. Ansible itself is a 50 to 60 hour course. Obviously, we are not going to learn all those things, 50-60 hour course. We are going to learn the initial 8 to 10 topics out of 20 topics. Okay, so 8 to 10 topics, more than enough to start the automation journey. अगर आपको 8 to 10 टॉपिक्स आते हैं तो आप इजीली इंटरव्यूज भी क्लियर कर पाएंगे, ठीक है? बिकॉज नाउ यू हैव अ कंप्लीट पैकेज. यू नो लाइनक्स, द फंडामेंटल्स. ना फंडामेंटल्स में भी बहुत कुछ होता है, उसको फंडामेंटल्स बिल्कुल बेसिक नहीं होता है. शेल स्क्रिप्टिंग, हाँ, इसका थोड़ा फंडामेंटल होगा, बेसिक स्टफ होगा. कंटेनर्स बेसिक, फायरवॉल बेसिक, नेटवर्किंग बेसिक, एंड एंसिबल बेसिक. सो ऑल दीज कंबाइंड will help you clear the interviews. Now, as a having these many skill set, आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं? You can apply
for Linux administrator role, system administrator, Linux admin role, right? System engineer role, DevOps role. Okay, so बहुत सारे roles available है. In fact, there is a role for storage manager. Okay, and then there is patching manager. All these roles are then open for you. Okay, so there is a chat. Password. एक सेकेंड. पासवर्ड कमांड आपने रॉन्ग लिखा है. हाँ, ये कमांड नहीं है, ये एक ऑप्शन है. लाइनेक्स में पासवर्ड कमांड इज PASSWD. Okay, that is a command, but this is not a command. This is an option for user module in Ansible. ये Linux से अलग है, different है. Okay. Okay. So these are the skills that you will get after this course, and obviously you can mention them in the CV. All right. Okay. So let's. Yes, Anand. Any doubt? Sir, a quick question, sir. Yes, please. So basically, sir, a couple of them. So one is that all the different flavors of Linux, the distros. Mhm. So Yeah. I have seen that I've not worked hands-on, but I've seen that there are command different command for same functionality which we use. Yeah. Got it. Yeah. So is there any cheat sheet whereby we can refer to those? Like we'll get it? Yeah, absolutely. Let me give you an idea. It's a good question. See, first of all, the fundamentals are the same. Okay, so when I talk about the fundamentals, it means how Linux works internally. It is the same. Linux कैसे काम करता है, commands कैसे काम करती हैं, वो exactly same है. हो सकता है कि commands का name different हो. For example, in Red Hat, in Red Hat Linux, if you want to update the operating system, you will run the command DNF update like this. Okay, on SUSE, you will run ZYPP update. Zapper, it is called Zapper update or Zapper up. This is also fine. On Ubuntu, you will type apt update like this. Okay. So commands are different, but you see the pattern: command and the action, command and the action, command and the action. So this format stays the same. In fact, how it works in the background is the same. The command name is different. Fundamentals are the same. How it behaves, how the commands run, this is exactly the same. Maybe the command names are different. और अगर आपको Linux आता है तो ये commands तो आप Google भी कर सकते हैं. ठीक है? Another example is on Red Hat, you have a firewall D module, or we can say firewall -cmd command. तो firewall-cmd command Linux RHCL में यूज होती है, SUSE में कुछ और यूज होगा, Ubuntu में कुछ और यूज होगा, बट अल्टीमेटली काम वही हो रहा है जो firewall-cmd command करेगा, right? Talking about the cheat sheet, for RHCL, I have the cheat sheet handy. I can provide the cheat sheet for SELinux and Ubuntu also. Okay, it's not a big deal. Ultimately, you as a system admin, when you finish this course after 50 hours, you will be able to work on any operating system. Trust me. Okay, most of the things are exactly the same. All right. Yeah, except few commands which I just said. Those are different, 1 or 2, maybe 3 or 4 at max. But otherwise, everything else is the same. All right. Thank you, sir. Yeah. Okay, so one more thing. See, when you learn Linux, what else can you do after learning Linux? After learning Linux, you can get into cloud computing. Okay, Linux is the fundamentals for cloud. You can get into cybersecurity. You can get into networking, like you can manage routers, switches, and other things with Ansible automation. Okay, Linux and Ansible, right? See, on Linux, the logs are being stored for all the network devices. Okay, and you can run some sort of software and to check what's happening on what device. Okay, everything will happen on that Linux machine, right? So it is like that. So Linux is not just for system administrator. It is the step number 1, or you can say the platform. And then you have multiple career paths. Okay, so it can be like Linux with Ansible, which means automation engineer. Okay, Linux with, let's say, containers, or simply say Kubernetes. Kubernetes is containers with Kubernetes complete package. Okay, so you are DevOps engineer, right? Or Linux with cloud.
you are cloud engineer, AWS cloud, okay, maybe AWS, Azure, any cloud platform, GCP, then you are cloud engineer. Okay, Linux with the CEH, then you are cybersecurity expert. Okay, so there are so many options available. Okay, and yes, as I said, with the certification in hand, you can actually be shortlisted first or compared to other candidates who are not certified. Obviously, you'll be given the higher priority. Okay, right. So now let's talk about the objectives. What are you going to learn in Linux operating system? Okay, so let me just open the file straight away. Just give me a second. All right. I hope it's visible. Yeah. Okay, so what are you going to learn in this course, Linux Fundamentals / RHCSA preparation course? Number one, how to, first of all, the fundamentals, obviously, like how it works, how Linux works, commands works, and then use essential tools, the basic commands. Okay, basic commands like create a file, create a folder, delete a file, copy, paste, move, cut, paste, etc. Okay, change the permissions on files and folders, etc. Okay, and then create simple shell script. What is a shell script? Shell script is a file जहां पे आप मल्टीपल कमांड्स को लिखेंगे और वो कमांड्स चलेंगी. वो शेल स्क्रिप्ट आप अपने सर्वर पे चलाएं, मतलब एक सर्वर पे चलाएं, मल्टीपल पे चलाएं, आपकी मर्जी. बट ये भी एक ऑटोमेशन का टूल है. ओके, सो यू कैन यूज शेल स्क्रिप्ट टू परफॉर्म सब सॉर्ट ऑफ ऑटोमेशन. रिपीटेटिव टास्क कैन बी हैंडल्ड विद शेल स्क्रिप्ट्स. ओके, तो आपको अगर आपको शेल स्क्रिप्ट आती है बनानी तो आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं. ओके, इससे बेटर होता है एंसिबल. एंसिबल में तो ज्यादा कुछ लिखना भी नहीं है, वो तो थोड़ा सा लिखना और बहुत सारा काम कर देगा. ठीक है, वो समझाएंगे आपको आगे जाके. Right, and then running operating systems. Running operating systems means, first of all, you will understand how the operating system boots up. मतलब कि start कैसे होता है server. लेमैन टर्म्स में हम बोलते हैं विंडोज लोड हो रही है या ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है. तो लोड हो रहा है मतलब क्या? इसका मतलब कि बूटिंग प्रोसेस चल रहा है. ओके, सो व्हाट इज अ बूटिंग प्रोसेस? हाउ सिस्टम स्टार्ट्स एंड हाउ टू इंटरप्ट द बूटिंग प्रोसेस. मतलब आप बूटिंग प्रोसेस को बीच में रोक भी सकते हैं अगर आपको कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको फिक्स करने के लिए. ओके, हाउ टू आइडेंटिफाई सीपीयू यूटिलाइजेशन, हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन, हाई रैम यूटिलाइजेशन. अब पता कैसे लगेगा कि कौन सा प्रोग्राम ज्यादा सीपीयू यूज कर रहा है, ज्यादा रैम यूज कर रहा है, या कहीं वो स्टक तो नहीं हो गया, हैंग स्टेट में तो नहीं है, हंग स्टेट में तो नहीं है. राइट, तो वो सारा आप ऑब्वियसली यूजिंग कमांड्स आप डिटरमाइन कर सकते हैं. राइट, एंड उसको फिक्स कैसे करना है, ये सब तो इस टॉपिक में ये सब कवर होगा. राइट, ऑब्वियसली लॉग्स भी, सिस्टम लॉग्स, ये सब कवर हो जाएगा. नेक्स्ट इज कॉन्फ़िगर लोकल स्टोरेज. इट मींस मैनेजिंग हार्ड डिस्क. सर्वर पे जो हार्ड डिस्क एलोकेटेड है उसको कैसे मैनेज करना है, एडिशनल पार्टीशन क्रिएट करना है या क्या करना है, आई मीन वो सारा का सारा हो जाएगा विद लोकल स्टोरेज टॉपिक. नाउ इन विंडोज यू सी द हार्ड डिस्क है सी ड्राइव, डी ड्राइव. लाइनक्स में ऐसा नहीं होता है. लाइनक्स में हार्ड डिस्क इज अ हार्ड डिस्क. इसके पार्टीशंस आप कैसे यूज करते हैं वो मैटर करता है. वी विल टॉक अबाउट दैट इन दिस टॉपिक. नेक्स्ट इज डिप्लॉय एंड कॉन्फ़िगर and maintain the systems. How to update your operating system, how to install applications, how to remove the applications, all those things. Okay, how to start stop services. Next is basic networking. So in this manage networking and introduction to basic networking, इसमें आपको IP के बारे में, network services, how to change IP details. Okay, how to play with firewall. Firewall क्या होता है? Firewall is just a tool to filter network traffic. That's it. आपके सर्वर पे कौन सा डेटा आना चाहिए नेटवर्क से, ये कंट्रोल होता है. इनफैक्ट आपके सर्वर से कौन सा डेटा बाहर जाना चाहिए थ्रू द नेटवर्क, ये भी कंट्रोल होता है थ्रू फायरवॉल. ओके, तो आप ब्लॉक कर सकते हैं कि सर्टन ट्रैफिक ना आए मेरे सर्वर पे,
ओके, तो हो सकता है सब कुछ. देन मैनेज यूजर एंड ग्रुप्स. सर्वर्स आर नॉट मेंट फॉर ओनली वन यूजर. सर्वर्स पे एप्लीकेशन टीम भी लॉग इन करती हैं, स्टोरेज टीम भी लॉग इन करती हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स भी लॉग इन करते हैं, एंड क्लाइंट भी लॉग इन करता है. इट मीन्स एट अ टाइम मल्टीपल यूजर्स माइट बी लॉग्ड इन. Okay, so as it supports multi-user, so you should be capable enough to identify what is happening on the server, like how many users are logged in right now, or in fact how to create users, how to manage users. Okay, so users related everything is here in manage users and group topic. Okay, next one, manage security. So like firewall, there is another thing called SELinux. SELinux is just like a security guard in your apartment building. कौन आ रहा है कौन जा रहा है बिल्डिंग में, क्या ये जो भी आ रहा है क्या वो ऑथराइज्ड है, क्या उसको ऊपर जाना चाहिए कि उसको वहीं रोक देना चाहिए. तो ये कौन चेक करता है? सिक्योरिटी गार्ड ही चेक करता है, राइट? तो लाइकवाइज इन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, रेड हैट लाइनक्स, देयर इज अ सिक्योरिटी सिस्टम कॉल्ड SE लाइनक्स, सिक्योरिटी एनहांस्ड लाइनक्स. तो इसका काम है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में चल क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसको देखना. क्या कोई एप्लीकेशन किसी फाइल को ओपन कर रहा है, क्या ये अलाउड है? अगर नहीं है तो वो एक्शन ब्लॉक हो जाएगा, वो एप्लीकेशन फाइल ओपन नहीं कर पाएगा. ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, राइट? द लास्ट टॉपिक इज मैनेज कंटेनर्स. सो इन कंटेनर्स यू विल लर्न द बेसिक्स ऑफ containerization. Containerization is the way forward. In fact, after maybe getting hired, you will start straight away working on containers. So containers is not new, but yes, it is here to stay for long. So containers, Kubernetes, ये तो ऐसी चीजें हैं जो आपको Linux के बाद आनी चाहिए अगर आपको एक्चुअली में एक्सेल करना है अपने करियर में. ठीक है, alright, so we'll talk about all these things. And then, as I said, RHCE. RHCE is Red Hat Certified Engineer. अगर आपको RHCE का सर्टिफिकेशन क्लियर करना है, you need to learn Ansible. Okay, so obviously this is not a RHCE course, but I will help you understand and learn Ansible. First 8 to 10 topics approximately, even more, maybe 12, 13 topics. So here we are going to learn what is Ansible, how to set it up, how to configure it, what is inventory, what is modules, variables, plays and playbooks. Okay. And then we have some advanced topics, which obviously we won't cover, right? But still, with these topics, you'll be able to start your automation. Just after learning Linux, you can immediately switch to automation. आपको commands याद रखने की जरूरत नहीं है. Ansible को use करो और सारा काम कर लो. चाहे एक सर्वर हो, चाहे 100 सर्वर्स हो, doesn't matter. ठीक है? तो ultimately you have to be in the mindset that you have to automate stuff, automate the task. Don't stick with the commands. Commands को सीखना is good. आप कमांड्स को एक बुक नोटबुक में भी लिख लीजिए. ओके, जरूरी नहीं है याद ही रखना सब कुछ, बट यू हैव टू बी श्योर दैट यू लर्न एटलीस्ट वन ऑटोमेशन टूल, लाइक आई सेड एंसिबल. ठीक है, तो एंसिबल अभी मैं स्टार्ट करवा दूंगा इसके साथ इस कोर्स में, बट आपको इसे कैरी फॉरवर्ड करना होगा. ओके, अल्टीमेटली आपका करियर प्रोग्रेशन इसी पे डिपेंड करता है ऑटोमेशन में. मेरी कंपनी में जब मैंने अभी जो रिसेंटली स्विच किया था, मतलब 3 साल पहले, तो उसमें 150 लोग थे मेरे प्रोजेक्ट में, और फ्रॉम डे वन आई वॉज हायर्ड एज अ ऑटोमेशन आर्किटेक्ट और एंसिबल के बेस पे. तो फ्रॉम डे वन दे हैव बीन सेइंग मूव एवरीथिंग टू ऑटोमेशन, मतलब जो भी आप मैनुअल कर रहे हो उसको ऑटोमेट करो. क्यों? क्योंकि हमें क्लाइंट से प्रेशर है, एंड ऑटोमेशन का प्रेशर है, एंड ऊपर से बजट का इशू है, कॉस्ट कटिंग चल रही है. और मेरे देखते देखते विद इन दीज 3 years वी आर रिड्यूस टू जस्ट 30. कहाँ 150, कहाँ 150, कहाँ 30. अभी हम सिर्फ 30 लोग काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट में. 80% to 90% काम ऑटोमेशन से हो रहा है, और जो बाकी 30 लोग हैं उसमें मैक्सिमम तो सिर्फ ये प्रोजेक्ट टीम के हैं जो क्लाइंट नेगोशिएशंस करते हैं. टेक्निकल स्टाफ तो बहुत ही कम रह गया. मतलब कि कितने रह गए मैं आपको बताता हूँ, गिन के बता सकता हूँ. लाइनक्स टीम में 2, विंडोज टीम में 2, 4 सॉरी, और एक डेटाबेस में वेब सर्वर जैसे IIS सर्वर होता है, टॉम कैट होता है ना, उनमें एक. तो इतने से लोग रह गए. कहाँ 150 थे जिसमें मैक्सिमम टेक्निकल रिसोर्सेज थे, और अब सिर्फ गिनती पे रह गए. ओके, तो ये मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह है, बट स्पेशली इन माय प्रोजेक्ट
because our client is a strong advocate of latest technology, AI, machine learning and automation. ठीक है, तो they basically had this in mind कि जो over the period of next 2 to 3 years हमें इतना काम ऑटोमेशन से ही करना है, तो वैसे ही हो रहा है. ठीक है, तो इट्स गुड दैट यू नो लाइनक्स, बट डू यू नो ऑटोमेशन? दैट यू नीड टू कीप इन योर सीवी. सीवी पे लिख के कोई फायदा नहीं जब कोई आएगा ही नहीं आपको, तो इसलिए सीखना पड़ेगा. ठीक है, तो टेक इट एज अ स्टेप नंबर 2 आफ्टर Linux, after RHCSA or after Linux, take it as step number 2. You have to learn Linux, Ansible, and parallelly आप Kubernetes भी सीख सकते हैं. ठीक है, again, if you have the time and the bandwidth. Okay. All right. So yeah, so here it is, the overview of this course. And let me just quickly show you the Red Hat Linux operating system, how it looks like. Obviously, we will not be using the GUI. हम GUI में नहीं काम करते हैं, this graphical interface. We simply connect to the server using command line interface. जैसे देखो मैं भी connected हूँ एक server में. इस सर्वर का नाम है वीक और वीकेंड. ये पिछले बैच का है, वीकेंड बैच का है. राइट, मैं रूट यूजर से लॉग्ड इन हूँ. राइट, एंड आई कैन रन द कमांड्स. जैसे आई एम रनिंग these commands and I'm getting the output. Right, so I'm connected to a virtual machine which is running on my Windows laptop. Okay, देखो कि अभी पैरेलली वीकेंड मशीन चल रही है और RHEL 10 मशीन चल रही है. राइट, so we don't log in, but still, for the initial 1 week, we'll be using GUI just to give you a perspective, like ho kya raha hai. Okay, so just give you an overview. This is the graphical user interface. Let me go full screen. Hold on. If you click on this Red Hat icon, you will get to see a dock from below. Okay, and some applications are already added to the dock. And then there is show application icon. Click on it. Remaining applications, you will see all those remaining applications. Okay, and then there is Firefox, the browser, pre-installed. Okay, settings, you go to settings and you'll see all the options which are here, right? Like this. One more thing which I almost forgot to tell you. There is a earning model of Red Hat. Red Hat कमाई कैसे करेगा जब वो सब फ्री में दे देगा, right? In fact, all the enterprise level softwares, they need a dedicated team to maintain it. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डेडिकेटेड टीम ही काम करेगी ना उसको ठीक करने में. उस टीम को पैसा कौन देगा? हम ही तो देंगे जो यूज कर रहे हैं. तो इसका मॉडल देख लो क्या है, अर्निंग मॉडल. तो RHCL is free to download, free to use, but the updates are not free. Updates and Red Hat support is paid in the form of subscription fee or license fee, which is a yearly cost. Okay, per year, companies need to pay the subscription fee. With one subscription, 2 virtual machines can be used with the Red Hat operating system. Okay, or 1 subscription per physical server. This is the logic. Okay, so updates and Red Hat support, this is paid. If you want to update your operating system, you need to have that subscription handy. If you want to contact Red Hat and get support, ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ चल नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो यू विल कॉन्टैक्ट रेड हैट सपोर्ट. राइट, रेड हैट सपोर्ट तब तक नहीं मिलेगी जब तक यू पे फॉर द सब्सक्रिप्शन फी. We are students. Are we really going to pay? It is around $300. Are we going to pay per server, per subscription? No. You can get subscription for free. How? You just register as a developer on Red Hat. Okay, you register as a developer on Red Hat. You get 1 subscription for free, which is valid for 16 virtual machines. So you get 1 subscription where you can tag 16 virtual machines. मतलब अपनी लैब में 16 वर्चुअल मशीन चला सकते हैं 1 सिंगल सब्सक्रिप्शन से. होगा क्या? आपको फ्री अपडेट्स मिलेंगी, लिमिटेड रेड हैट सपोर्ट मिलेगी, बिकॉज इट इज फ्री. नाउ व्हाई डिड रेड हैट केम अप विद दिस डेवलपर सब्सक्रिप्शन एंड ऑल? द थिंग इज, CentOS operating system, previously it was the one which was free to download, free to use, free updates and no support. Everything free without support, and it is more suitable for startups जिनको पैसा नहीं खर्चना,
राइट। सपोर्ट के लिए सपोर्ट की जरूरत नहीं है बिकॉज दे हैव कैपेबल लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, दे कैन फिक्स इट। ठीक है, तो फ्री डाउनलोड, फ्री यूज and free to update the operating system, CentOS operating system. It was a production level operating system. You can use it on, you could use it on real servers in the sense live servers or application servers. Now Red Hat acquired CentOS. Okay, it happened way back. I mean, it's been more than 10 years, I think. So Red Hat acquired CentOS, and I think 2 years back they stopped the development of production version of CentOS. Now, Red Hat is doing this. Whenever there is a new feature on Red Hat, that feature is first tested on Fedora operating system. Again, this is also owned by Red Hat. Okay, so Red Hat owns Fedora. So Fedora operating system is used as first level of testing operating system. That is why it has latest and the most latest features and most advanced, commands and all. तो इसमें सब कुछ आपको लेटेस्ट मिलेगा, बट इट इज ऑल बगी। बगी मतलब एरर्स। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एरर्स होते हैं, एंड दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट फॉर प्रोडक्शन, नॉट फॉर प्रोडक्शन सर्वर और द लाइव सर्वर। ओके, देन जब यहाँ टेस्टिंग पूरी हो जाती है, देन द सेम कोड इज मूव टू CentOS ऑपरेटिंग सिस्टम। CentOS में जो लेटेस्ट वर्जन आप लेंगे वो लेस बगी होगा, लेस एरर्स होंगे उसमें, बट अगेन इट इज नॉट सुटेबल फॉर प्रोडक्शन सर्वर। तो जब यहाँ टेस्टिंग खत्म होती है, देन फाइनली द कोड इज अप्लाइड टू RHCL and this is released and then companies update their operating systems. ठीक है, तो ये स्टेबल रिलीज होता है। ओके, तो जब से CentOS का प्रोडक्शन बंद किया, which means now CentOS is not error free, it is not production operating system, so nobody would use it on the real server क्योंकि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो इससे बैकलैश भी हुआ रेड हैट को कि भी तुमने बंद क्यों कर दिया, अच्छा भला ये फ्री में देते थे, अपडेट भी फ्री में होता था। Then they said, okay, don't worry, move to RHCL, RHCL use करो and use this free subscription. Register as developer, you will get one subscription for free and you can run 16 machines with it. And you can also renew this subscription after 1 year. So you can keep on renewing after every year. तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कीप ऑन, जस्ट क्लिक द रिन्यू बटन, वो हो जाएगा रिन्यू। तो ये मॉडल है। अब जो जितनी भी कंपनीज हैं जो रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करती हैं, दे बेसिकली पे सब्सक्रिप्शन फी एवरी ईयर। इन माय ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ देयर आर 1000 लाइनक्स सर्वर्स। ठीक है, वो सारे के सारे सर्वर्स कहाँ पे हैं, कुछ आई थिंक सारे के सारे वर्चुअल हैं, तो VMware के इंफ्रा में रन कर रहे हैं, राइट। तो इन सारे सर्वर्स का जो भी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट बनता है पर ईयर, हमारी अकाउंट टीम उसको रिन्यू करती है। $5000, $6000 जो भी बनता है वो उसको पे करती है और रिन्यू करवाती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, तो हम रेड हैट के पास जाकर सपोर्ट नहीं ले पाएंगे। इट्स जस्ट लाइक एन AMC। पहले तो वारंटी मिलती है, फिर AMC करवाते हैं लोग, राइट। इसमें कोई वारंटी कुछ नहीं है, सीधा आपको सब्सक्रिप्शन दो और सपोर्ट ले लो और अपडेट्स ले लो। नहीं दोगे तो नहीं होगा। सारी कंपनीज ऐसे ही काम करती हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स भी पेड होते हैं, कंपनीज जो पे करती है माइक्रोसॉफ्ट को। ओके, सो सारा कंपनीज में सब्सक्रिप्शन बेस्ड पे ही काम होगा क्योंकि उनको वेंडर सपोर्ट चाहिए। जो भी एक कंपनी सॉफ्टवेयर यूज कर रही है उसका सपोर्ट उनको चाहिए होता है उसी कंपनी से जिसने बनाया है, तो उसकी एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं, राइट। आजकल ऐसे ही होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, अगर उसका सपोर्ट चाहिए तो पैसे दो और उसका सपोर्ट ले लो। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, एक जैबिक्स करके एक मॉनिटरिंग सोल्यूशन है जो सर्वर्स को मॉनिटर करता है कि सर्वर की स्पेस तो नहीं फुल हो गई, CPU तो नहीं हाई जा रहा, रैम तो नहीं फुल हो गई, मतलब यूसेज उसकी फुल हो गई। तो जैबिक्स एक्चुअली इज ओपन सोर्स, बट अगर आपको इसकी सपोर्ट चाहिए देन तो आपको जैबिक्स से ही इसकी सपोर्ट लेनी पड़ेगी बाय पेइंग द सब्सक्रिप्शन फी। इसकी सपोर्ट फी पे करनी पड़ेगी, नॉट फ्री, सॉरी, फी। ओके, तो उसकी फी पे करो, सपोर्ट ले लो। आप नहीं करेंगे, आपकी कंपनी या आपके प्रोजेक्ट में जो अकाउंट टीम है वो टेक केयर करेगी। ओके, तो आजकल ये भी एक बिजनेस मॉडल है। एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाओ, इसकी अडेप्टेशन इतनी हो जाए वर्ल्ड वाइड कि लोग इसी को ही यूज करें, एंड अल्टीमेटली जब सपोर्ट की बारी आई तो सब आपके पास भाग के आएंगे, इसे ठीक कर दो या हमें हमारी हेल्प कर दो इसको फिक्स करने में, या इसकी कॉन्फ़िगरेशन ठीक कर दो, तो यू विल बी चार्जिंग इट। तो ऐसे काम चलता है। ओके, alright guys, so this is the overview
for Linux operating system fundamentals. I hope you got to know something new with this webinar. Any doubts, guys? Any questions till now? सर इसमें हम अपाचे वगैरह सब पढ़ेंगे या हाँ, तो इसमें जो हमारा एक टॉपिक मैंने बताया था ना, ये रहा, डिप्लॉय कॉन्फ़िगर एंड मेंटेन सिस्टम्स। ओके, तो इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू लर्न अपाचे सर्वर। अपाचे सर्वर इन RHCL is called HTTPD. ठीक है, अपाचे सर्वर ऑन Ubuntu it is called Apache 2. Apache server on SUSE it is called Apache 2, like that. So हम क्या पढ़ेंगे? HTTPD, it is the same thing. इसके बाद हम पढ़ेंगे NFS server, network file system. Okay, so NFS server, and इसके बाद हाँ, तो ये दो मेन सर्वर्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हम it is officially part of the course as per Red Hat as well. Okay. ओके Yeah. और सर आपका बैच और टाइमिंग वगैरह तो वो तो बाद में आएगा ना सर? हाँ, ये गौरव आपको इंफॉर्मेशन देंगे। ओके ओके गौरव ठीक है, yeah, so it is going to be a weekday batch, I guess, 1 hour a day for 5 days a week. In total, we are going to use 45 to 50 hours of duration. Okay, and yeah, so that's it. ओके सर थैंक यू Okay. So guys, on weekend it's English batch, and end of this month, on weekdays it's a Hindi batch. We are running around 9 or 9:30. Okay. Perfect. Yeah. Yeah. Weekend batch timing what, sir? Same time, sir. Like Same. Saturday, Sunday, 12 afternoon. But it's overlap with our SD-WAN batch, like 11 to 1. 11 to 1. And you are a part of this also for this course? Yeah, I am a part of this also, means all the network automations. Your trainer is Arvinder, right? Yes, yes. Let me check how to do it that. Okay. Yeah, please. Thank you. Thank you. All right. So for the weekend batch also, the same thing. Now this time for weekend, we are going to use 2 hours, Saturday, Sunday. It means 4 hours, right? Again, it is going to be 45 to 50 hours in total duration. All right. And guys, obviously, you know, this is a live class, recorded class. You can check the recordings from the student portal. You'll get the recordings. Okay. And you can ask the doubts in the live class. Mostly I've seen, you know, people referring to recordings. That's fine. But if you are in the live class, you get the opportunity to get your doubts cleared. Okay. All right, guys. So this is it from my side for today. And yes, please. Yeah, hi. Hi. Actually, I live in Australia, and then I enrolled myself for RHCSA, but Okay. I want to know when is the weekend class will start and what will be the timing. Timings are going to be 12 to 2 p.m. India time, Saturday, Sunday. I think most probably, Gaurav, can you just confirm whether we are going to use the next weekend as a starting, which is what, 20th? Are we going to start on 20th, Gaurav? Yeah, right, sir. Yeah. Today just a webinar, and from 20th we have our regular classes. Yeah, right. And it will be 12 to 2. Yeah, Yeah, 12 right. to 2 p.m. India time. Yeah. And how long this course will last? See, 2 it's months. in total 40 to 45 hours. So maybe 2 to 3 to 4 months. 2 or 2.5 months maximum, guys. Okay. Yeah. Okay. हेलो सर। Yeah, hi. मुझे तो ये हिंदी में बताया गया है सर, वीकेंड क्लासेस हिंदी में होगा करके बताया था। तो Okay. Weekend पे English होगा, हिंदी weekdays और पे इंग्लिश होगा, में। bro. Okay, एक so बार Gaurav, अपने can you counselor just से बात कर cross लेना। check? Yeah, can you just cross check with these things? और आपको गौरव अपडेट भी दे देंगे कि कब कौन सा बैच कब है, right? Okay. Thank you, sir. Okay, guys, thank you so much for today. Let's connect on the day one, which is, for the weekend, which is 20th, and for the weekday, Gaurav is going to confirm. Okay, guys, till then, have a good day. Bye-bye. Thank you, Amit.